Hello and welcome back to NH Unscripted. Today we are exploring a brand new culinary destination in the heart of Gurgaon. Right, it's Golf Avenue 42, which is located on the iconic Golf Course Road, right opposite Shiv Nadar School. अच्छा, बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे you're in a boutique shopping complex, but the moment you step in, you're instantly transported into the world of gourmet experience and fine dining charm. Golf Avenue 42 is a thoughtfully designed, compact market that houses a hand-picked selection of restaurants, each bringing something unique to the table. So whether you're in a mood for having modern Indian या classic European, Asian fusion और कुछ experiment global cuisine भी अगर आप खाना चाहते हैं तो I think this is the place that has it all. Market features a mix with a few select retail outlet, two property consultants और मैंने देखा दो बैंक के ATM भी वहाँ अवेलेबल थे. उसके अलावा एक ज्वेलरी शॉप है. But I think it's the diverse lineup of restaurant that truly defines the vibe of the market. जो अलग-अलग तरीके के fine dine restaurants वहाँ थे, with plush interiors to open terraces. Every restaurant here is styled to impress people. Restaurants की अगर हम बात करें तो हम चलते हैं एकदम राइट साइड पर, वहीं से ही शुरू करते हैं. तो सबसे पहले था पोर्शा. जी हाँ, ये रेस्टोरेंट है, वो कार वाला पोर्शा नहीं है. ये 2 फ्लोर्स पे डिवाइडेड था, 2 फ्लोर पे था, बट जो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था वो था कोका. और अगर आपको नहीं पता तो कोका इज बाय युवराज सिंह. यस, यू हर्ड इट राइट. आर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह का ये रेस्टोरेंट है कोका. उसके अलावा नारदाना जो बहुत ही फेमस है और कई जगह अवेलेबल है, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़. इसके अलावा सोरबो भी वहाँ अवेलेबल था. और एक प्योर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट विच इज कॉल्ड एज हिक पंजाब, which was under construction, but we are hoping that the restaurant should be up and ready in the next few days. But चलिए हम दिखाते हैं कि हम कहाँ गए और हमने कहाँ खाना खाया. Mrs. Kaur, the name was enticing enough for us to enter and check out what the restaurant was all about. हमें लगा कि ये एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट होगा, but to our surprise, it's a cafe cum bakery. But it's still not open, so we decided to go somewhere else. And after a fair bit of back and forth between Anardana and Effengut, we decided to try something new and eventually we settled on Effengut. And as you can see, the interior boasts exposed brick walls and industrial style lighting, creating a warm and inviting environment for everybody. It had wooden furnishing with vintage decor elements to add characters to the restaurant. So the restaurant is spread across 2 floors with designated smoking and non-smoking areas. Since we prefer non-smoking, we chose to sit on the lower floor while the terrace above caters to those who smoke. They also had different styles sitting and we prefer a window one or a high chair. तो मेन्यू की अगर बात करें तो it's a multi-cuisine restaurant. So everything is available starting from North Indian to Chinese to Italian, fast food, desserts. Everything is all available under one roof. But the highlight of the restaurant is the crafted beer. Yes, Effin Gut is renowned for its extensive selection of handcrafted beer, offering a variety of styles to cater to diverse palates. और क्योंकि हम तो पीते नहीं है तो माय अपॉलॉजीज, मैं उसका रिव्यू तो आपको नहीं दे पाऊंगा, बट वील मूव ऑन टू फूड एंड वी विल डेफिनेटली टेल यू how the food tasted and what all did we try. And again, when you're sitting in a multi-cuisine restaurant, you always get confused कि आप Italian खाना चाहते हो, Chinese खाना चाहते हो, North Indian खाना चाहते हो या कोई fast food खाना चाहते हो. But we being North Indian, we always opt for North Indian food. पर हमने शुरुआत करी उनके एक सिग्नेचर मॉकटेल से, a refreshing blend of pomegranate juice, fizzy soda and a burst of bold Indian masala. It had a perfect balance of sweet, tangy and spicy, making it truly punchy on my palate. अच्छा, नींबू और पुदीने के बिना तो सारी ड्रिंक्स अधूरी होती है, चाहे आप इंडिया में हो और चाहे आप इंडिया के बाहर हो. बारी आ गई थी स्नैक्स ट्राई करने की और हमने ऑर्डर किया था एक सोया चाप. रेस्टोरेंट के हिसाब से ये मैदा सोया चाप नहीं है, इट्स ऑफ सोया ओनली. एंड मी बीइंग अ जिम लवर, protein always works for me in all my meals.
हमने ट्राई किया with some mint sauce and some lachha onions, and let me tell you, soya chap tasted very different from what I've tried in some other restaurants. और मैदा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. So I really enjoyed the soya chap. But before we move forward, I wanted to show you the menu as well and show you the exact soya chap that we ordered, so that you can also order the same in case if you're a protein lover. स्नैक्स खत्म हो गया था और अब बारी थी मेन्यू को दोबारा से पलट कर देखने की कि मेन कोर्स पे हम लोग क्या खाना चाहते हैं. We being a light eater, we were deciding to order only one platter that can serve both of us. तो हमने डिसाइड किया इनका दाल मखनी कॉम्बो, जिसमें एक दाल मखनी आती है, एक लच्छा पराठा या बटर नान आता है, थोड़े राइस आते हैं, अचार आता है और पापड़ आता है. But since we don't like rice, I wanted to check if they can replace my rice with maybe a naan or a roti, so that we can have 2 rotis, 1 dal makhni, papad and achar in that platter. That will work for both of us. Acha, let me also tell you that the staff there was highly courteous, hospitable, और उन्होंने हमारी बात मान ली. उन्होंने हमें 2 लच्छा पराठा, एक दाल मखनी, पापड़ और अचार का कॉम्बो बनाकर दे दिया. अच्छा, ये कितने लोगों के साथ होता है, जब आप कुछ खा लेते हैं तो आपकी भूख फिर कंट्रोल होती ही नहीं, और यही हमारे साथ भी हो रहा था. हम स्नैक्स खा चुके थे और अब क्योंकि पेट में कुछ चले गया था तो हमारी भी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, एंड वी वर ईगरली वेटिंग फॉर आवर मेन कोर्स टू कम. एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट फाइनली आवर फूड हैज अराइव्ड. बट आई थिंक द टीम गॉट कंफ्यूज्ड कि कुछ पेंडिंग है या सब कुछ आ गया या मेरा ही है कि नहीं है. बट मैंने उसे बोला भाई हमारा ये दे दो. सो here you go. As you can see, 1 lachha paratha is here separately, and we've got our full platter that includes dal, lachha paratha, papad and some masala onion. चलो आपको क्लोजअप दिखाते हैं ताकि आपके भी मुंह में पानी आ जाए. आई एम श्योर अभी तक तो आ भी गया होगा. तो ये देखिए दाल मखनी which was looking yummy and soft and crunchy लच्छा पराठास. और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये देखने में लग रहे हैं, टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही थे. and we thoroughly enjoyed their दाल मखनी and लच्छा पराठा. It was yummy and 100% recommended from our side. लाइट ईटर कह के हमने काफ़ी हैवी खा लिया था, and we had no space to add any dessert, so we decided to move on. But before we could step out, I wanted to show you the restaurant once again. आप जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा नीचे का लोअर फ्लोर है उनका, which was a non-smoking zone. And let me now take you upstairs to show you how it looks. The terrace, there was a big LED screen where you could see IPL match as well. So let's just quickly take you there and show you. And here we are on the terrace, which was half covered and half open for people who smoke. They can have their beer here, and they had their snacks counter also available on this floor. Big screen, and on the right side you see this covered area. This was again a non-smoking zone for the restaurant. With its diverse menu and inviting ambience, FN Gut at Golf Course Avenue 42 offers a delightful dining experience for both food and beer enthusiasts. So it's our 100% recommendation, and one should definitely try. And don't forget to like, share and subscribe to NH Unscripted for more such unscripted vlogs. Thank you so much for watching. Bye bye.